Hello everyone, this is Jagat Yadav, and today I will discuss with you how to build and how to grow your vocabs. Guys, if you have lots of vocabs, if you have more and more vocab words, then definitely you can speak English very well. So, here we have a few words, few vocabs which I will share with you. So let's start first. Today is 11th November. I will post every day 10, 10 vocabs every day. Please watch, continue this video. This video will be totally vocab series video. Only vocab. 10 vocabs. I'll post 10 vocabs every day. So by this vocab you can increase your fluency. So without wasting a time, just start. So first one is decimation, which is a noun. Decimation means बर्बादी. जब हम कोई युद्ध होती है उसमें काफी नुकसान होता है हमें, that is a decimation. That is a decimation, the act of severely damaging something or making something much weaker. बर्बादी. If we talk about synonyms, devastation, annihilation, rain, and antonyms, construction, restoration. Then second one is Novice. novice. नौसिखिया मीन्स गाइस जिसको कुछ पता नहीं होता है. एक आपने देखो, एक होता है एक्सपर्ट, एक होता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज में बिगिनर सा होता है, जिसको हम नौसिखिया भी कह देते हैं. दैट मीन्स a person new to and inexperienced in a job or situation. चाहे कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड में क्या है वो अभी उस चीज के बारे में जानता नहीं है उतना, तो हम उसको बोलते हैं नोविस. इफ वी टॉक अबाउट सिनोनिम्स, दैट इज बिगनर, inexperienced. If we talk about antonyms, expert, veterans, professional. Example is he was a complete novice in foreign affair. Behemoth. Behemoth, विशालकाय. That means something that is very big and powerful, especially a company or organization. जैसे कि आप सभी ने टीसीएस के बारे में सुना होगा. तो टाटा एक अपने आप में क्या है, ब्रांड है, एक अपने आप में एक ब्रांड कंपनी है. एंड फोर्थ वन Hamstring. इज हैमस्ट्रिंग. दैट इज अ वर्ब, अशक्त हो जाना. Severally restrict the efficiency or effectiveness. If we talk about synonyms, constraints, restrict, shackle. Jitter. Jitter, घबराना. जब हमें घबराहट सी होती है, जब लेट्स सपोज दैट कभी हम जैसे चीटिंग करते हैं एग्जाम में, तो हमें घबराहट सी होती है बहुत ज़्यादा. फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस. एनजाइटी. Aberration. Aberration. Next one is aberration, a fact, an action, or a way of behaving that is not usual and that may be unacceptable. Asamanya. That is asamanya. Synonyms, if we talk about synonyms, the anomaly, irregularity. Antonyms, normality, regularity, routine. A children woman was regarded as an aberration, almost a social outcomes. So next one is Fair.
fair, perform in a specific way in a particular situation or over a particular period, बसर होना, progress, get along, cope, survive. The party fared badly in the selection. Springboard. Springboard, that is a noun. A thing that lends impetus or assistance to a particular action, enterprise or development. आगे की प्रेरणा, जिसे हमें कुछ आगे देने वाला है, जिसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं, दैट इज अ स्प्रिंग बोर्ड. एक्सीलरेटर, जैसे हम एक्सीलरेटर देते हैं गाड़ी में तो गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज Adroit. एड्रॉइड्स. निपुण, क्लेबर और स्किलफुल, मतलब उस चीज में क्या हो, आप एकदम टैलेंटेड हो, मास्टर हो उसमें. डेफ्ट, अडेप्ट, टेक्स्ट्रॉस, Recalcitrant. रिकॉल्सिट्रेंट. आज्ञा ना मानना, जो बात नहीं सुनता हमारी, उसे बोलते हैं हम रिकैल्सिट्रेंट. दैट इज एडजेक्टिव. हैविंग एन ऑप्शनेटली uncooperative attitude toward authority or discipline. Resistant, uncooperative. I hope you are clear with this video, and this was 10 few vocabs. It will be help for you. Thank you so much. If you like this video, please like and subscribe my channel. I will post daily one new video regarding to speaking, listening and vocab. These three topic will be main topic. That means, okay guys, thank you so much once again. Thank you so much.